Hello, everyone. I have got the proud privilege of having Dr. Arshad Khan with me, who has passed the December 2021 FMG examination. My heartiest congratulations to you, Arshad, and to your family members. And I'm Thank you so sure much, your sir. family will be proud of you, and all faculty members are proud of your success. And believe me, this is the thing which we all work for. When I get a message Yeah, from anyone that Rajiv, I passed, these three words are the prime things. And thank you, Arshad, for giving me that, pleasure, that happiness. So once again, congratulations to you, Arshad. thank you so much. Thank you so much. Arshad, we'll be having few queries. Like, can you describe your journey of like FMG, like the how you started your journey as an FMG, which college you studied, and Okay. how did you finally started preparing for your FMG examination? Sure, sure, sure. First of all, sir, alhamdulillah, I have done it. So that for that, sir, I started this journey in 2015, sir. I went in Osh State Medical University, Kyrgyzstan, sir, and first 3 years were like okay in the university, sir, because we was having the 6th year courses, sir. So फिर उसके बाद जो सर 3 years आए थे उसमें मिक्सअप चलता रहा एंड फ्रॉम द 4th year आए मतलब ये था कि मैं सीरियसली फिर उस चीज को कर रहा था कि नाउ आई हैव टू डू द FMGE, सर. So as a FMGE student, sir, there was some good and some bad for us. कॉलेज से कभी कभी फील आता था कि ना नो वी कैन डू इट एंड समटाइम्स जब रिजल्ट डिक्लेयर होता था हमारे सीनियर्स का, सर, तो बहुत डर भी लगता था कि नो देयर इज Mhm. समथिंग जो शायद नहीं हो सकता है, फर्स्ट एक Mhm. अटेम्प्ट में तो नहीं हो True. पाएगा कभी भी. तो ऐसी Yeah. फीलिंग्स भी आती है बिकॉज ये सब कॉमन फीलिंग्स है जो हर किसी को आती है. अब मैं पास हो गया तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई हैव नेवर थॉट अबाउट दिस, बट या ये भी आता था और ये भी आता था कि नहीं यार कर सकते हैं. So Very good. like that, then I done it in the 4th year some subjects, then 5th year and 6th year. So in the 6th year we got some disturbances like COVID and all Yeah. in half of the 5th year and then the full 6th year, sir. So कभी इंडिया में कभी वहाँ ऐसा कुछ टाइम यहाँ पे हो रहा है, फिर वहाँ से आपको we got a call from college that you have to come and give your exams. So फिर वहाँ पे जाना पड़ा, सर. तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस आया पढ़ाई में, सर. Then I just started again in September, sir. So उस टाइम से फिर September डेली का 2021 you started. 2021, yeah, again. 21. Oh wow. Then Arshad, I September. am sorry interrupting you, but you know Okay. what? This is one thing which Arshad is telling. People who have passed the exam in this particular, span of, these 2 years have been very, very challenging. Not just the Yes. exam, but the COVID-19 has created a very different kind of challenge for the faculties, for the students, for the families, for the institutions, everyone. And people who have been Yes. able to really maintain the sanity, जिन्होंने अपने दिमाग को कंट्रोल में रखते हुए इस सारी Exactly, प्रॉब्लम के sir. बावजूद एग्जाम क्लियर किया है, hats off to them honestly, because ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में जब कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता, यू अंडरस्टैंड, कुछ भी Yes, sir. प्रिडिक्टेबल नहीं है तो भी हम करके दिखाते हैं, तो बहुत ही एक अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है. और उसके लिए अर्शद, बिलीव मी दैट इट मींस दैट यू गाइस हैव द स्ट्रेंथ टू रियली मेक इट हैपन, नॉट जस्ट इन दिस एग्जाम, in the future also. Whenever any challenge comes, you will be able to really execute all this strength you have in a proper manner. I hope so. Yeah, Inshallah. sure. So Arshad, you Yes, sir. started Thank you, in sir. your 4th year. You mean to say your 4th year you Yes. started preparing for Fourth year, this thing? yeah, for FMGE, sir. Especially, I was Wow. reading for my college exams. That was not like the sequence with the FMGE, but for Mhm. FMGE, we started in the 4th year, sir. 4th year, 5th year, and the 6th year. 6th year was like okay in the first half. Then in the second half, Yeah. we was like okay now अब So थोड़ा serious हो there जाते is हैं, a अच्छे से करते message हैं. for all the junior FMGs, I would say, who in the future, Yes. after maybe 2 years or down the line, they'll be appearing in the exam. Arshad has a message for you that please start studying while you are there in your university. Earlier, there Yes, used to sir. be a trend that once you come back to India, then join an institute, start studying. Believe me, what Arshad is conveying, because Arshad has, passed the exam in the first go with very good marks. It proves that the early start when you take in 4th year is going to add a lot of sort of determination within you that you're going to make it happen in the first go. And as you know, guys, that the exam in 2023 would be different from what we have currently. So my humble message to all the FMG juniors who are hearing this interview, that please take one bite out of Arshad's message over here, that start studying while you are there in your university. At least in the middle of the journey, please get serious about it. That okay, I have to target Indian exam. Okay.
Yeah, sir. Yeah, sir. Yeah. Definitely. Thank you, So, sir. Arshad, I have a question for you. Yes, sir. Like when you were preparing, were you, feeling that will you be able to make it, or were there any doubts in your mind? Will it happen or not? Sir, I think this is the most common question. Whoever is giving this exam or preparing for this exam, every single day or every one in a month, we got to this position that yaar ab nahi hoga ke hoga, we don't know, because in the preparation from the September till the December, sometimes I got this feeling, but yeah, I handle it कि नहीं कर लेंगे यार, कोई नहीं, अभी आएगा, ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, because some bad stories with the seniors that this person has given already 3 or 4 attempts, यार ऐसा क्या आ रहा है पेपर में कि वो कर ही नहीं पा रहा है, he is doing very good, he's studying for 8 hours, 10 hours, 12 hours, but हो नहीं रहा है. So that feel sir, really disturb us, and not for me more, but my friends, then they called me, Arshad yaar kya hoga, then I said okay, let's do it yaar, abhi upar wale pe chhodenge na, koi nahi, ho jayega. So I was actually preparing for my home, and some of my friend was in the Delhi, so that's why they sometimes we talk on this point, sir, यार मुश्किल लग रहा है, सब भूल रहे हैं यार, कुछ याद नहीं रह रहा अब तो. इन द लास्ट 15 to 20 days सर, वी वाज लाइक कुछ याद नहीं, अब तो सब खत्म, टोटली ब्लाइंड हो गया सब. देन इन द एग्जाम अर्शद एक बात को बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं आप सबके लिए, जो भी एफएमजी अभी देने वाले हैं जून में, कि ये जो फेलियर की फीलिंग है ना, ये साथ साथ चलती है आपकी. देखो आइडियल वर्ल्ड में तो लोग बोलते हैं कि भाई डोंट थिंक दैट यू विल फेल, बट बिलीव मी, वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं. वो मतलब बिल्कुल सर, मेरे को तो नहीं लगता, मतलब अगर मैं भी कोई एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे भी लगेगा होगा नहीं होगा. तो दिस इज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन. सो कभी आप में से जो लोग सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को और प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए, तो जब भी आपको नेगेटिव लगे ना कि भाई होगा नहीं होगा, तो ये सोचना कि ये एक नेचुरल नॉर्मल फीलिंग है. हर बंदा जो पास हो जाता है, और वो भी इससे गुजर के ही पास हुआ है, तो ये ऐसी डरने वाली बात एग्जैक्टली नहीं है. सर, उसको डील करना है, बस उस थॉट्स को ज्यादा सोच सोच के और बढ़ाना नहीं, डरावा नहीं बना लेना. किताब लेके पढ़ने बैठ जाना है, और पढ़ते पढ़ते और कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार हो जाएगा, है ना. पढ़ाई से ही बिल्कुल वो सर, सोल्यूशन निकलता है कि नहीं यार ये भी पढ़ा है बड़ा, कुछ तो आएगा पेपर में, है ना. और वो सबका हो जाता है, हमारा भी हो जाएगा. तो बिल्कुल सर. अच्छा, कौन से आपके जो सब्जेक्ट्स थे आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, मतलब आपको कि मतलब ये सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, मतलब. सर अब लाइक इट्स नॉट लाइक आप अभी सामने तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट ENT वाज द फर्स्ट वन जहाँ पे मेरे को ये था कि 100% क्वेश्चंस राइट करने, एक भी रॉन्ग नहीं जाना चाहिए इसमें सब, और बिल्कुल नहीं जाएगा ऐसा था. सो एक्चुअली आई वाज फोकसिंग लाइक दैट कि मुझे सेकंड पेपर के लिए 5 सब्जेक्ट्स मैंने अलग से करके रखे थे कि इनको तो मुझे 3 टाइम रिवाइज करना ही करना है, और इन पे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मेरी कमांड. इन दैट आई वाज डूइंग ENT, ophthalmology and PSM, medicine, and one of the this surgery sir. So वेरी गुड. मुझे ऐसा था कि अगर सेकंड पेपर में ये अगर हाथ में होंगे ना, तो आई कैन क्रैक इट क्वेश्चंस. So for the second paper and in the first paper, actually I have done all such subjects sir, मैंने किसी सब्जेक्ट को छोड़ा ही नहीं था, बट ये था कि we are not strong in any subject sir, every subject हम नहीं कर सकते sir. So there are some subjects where I am weak, there are some subjects someone else is weak. So that's like in the first paper I have done anatomy, biochem, micro was like okay for me, but ऐसा था कि ओके अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, अब बहुत ज्यादा अगर आ गया तो देन पैथो एंड फार्मा वाज लाइक nice, but FMT was for me like bonus marks for me, because I have done really well that, because I have done with the 2 other faculties also. So like I have divided the papers and I have chosen some subjects के इन पे से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो I have to do it, इनको नहीं छोड़ सकते, बाकी कुछ देख लेंगे. बहुत बहुत ही वैलिड पॉइंट है. जो भी सुन रहा है इसमें अर्शद की एक बात पे ध्यान दें. अर्शद ने बोला मैंने कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है. हाँ, सारे सब्जेक्ट बराबर लेवल पे नहीं तैयार हुए, वो ठीक बात है, क्योंकि एक 4 महीने के टाइम में आप सारे सब्जेक्ट को मास्टर तो नहीं बन सकते. लेकिन सब सब्जेक्ट में कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं जो आप ज्यादा, मतलब अगर आप बहुत डीप नहीं भी जानते हो तो भी उसको क्रैक कर पाते हो. तो वो 2-3 क्वेश्चन क्यों गंवाने. फॉर एग्जाम्पल एनेस्थीसिया, डर्मा में, साइकाट्री में कुछ क्वेश्चन है जो मतलब पूछे जा रहे हैं, पता ही लग जाता है कि थोड़ा पढ़ने से पता लग जाता है. तो अर्शद का एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, करने सारे हैं, उनमें से कुछ सब्जेक्ट का मास्टर बन जाना है, अच्छे से रिवीजन करनी है, डीप पढ़ना है, 2-3 रिवीजन करके पेपर में जाना है. तो उनमें आपका मेजर चंक स्कोर हो गया. और जो आपके सब्जेक्ट थोड़े से वीक थे, रिलेटिवली वीक, जो छोड़े नहीं थे आपने, उनमें जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन अगर वो आ जाते हैं तो आप 150 के उस पार हो जाते हो. Arshad, am I correct? Yes sir. That's Yeah, the philosophy exactly of. sir. Actually sir, like in the anesthesia
I have done just with the rapid revision. So there I have seen a ballot on that was a question on the this classification with the sir endoscopy and all. So I have done check, ये तो बहुत मोस्ट कॉमन चीजें पूछ ली, तो मलम पट्टी क्लासिफिकेशन पूछा, तो वो पता होता है कि ये तो पढ़ा था यार। तो ऐसी चीजें होती है जो दिमाग में रहती है सर, वो नहीं बिल्कुल, जाती। तो that's वो amazing, because आपने रैपिड में भी कितनी याद अच्छी रहती है। एग्जांपल दी है कि एनेस्थीसिया की एग्जांपल बता रहे हैं। सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये। लेकिन अगर मैं एनेस्थीसिया बिल्कुल में, सर, बिल्कुल। चलो टाइम कम है, आप नहीं पूरा पढ़ पाए, आपने मेजर चीजें पढ़ ली हैं उसकी, और लेकिन मलम पट्टी आ गया, तो मतलब पता है कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो उसको उसको क्यों लूज करना, मतलब बिल्कुल आपकी उसको सही क्यों गेम नहीं, प्लान आई है आपके पास से। सर यही मेरा हर सब्जेक्ट को लेके था, यस। वेरी गुड, के वेरी गुड। मोस्ट कॉमन थिंग्स, और यही हर फैकल्टी बताते हैं सर। एक्चुअली आपके भी मैसेजेस में यही था कि मोस्ट कॉमन पता होना चाहिए, रेयर अगर नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं, मोस्ट कॉमन चीजें तो पता होनी चाहिए एक्चुअली। तो उसी हिसाब से मैं वो बिल्कुल। चलता रहा बस लेके, उसी जी हिसाब से सर। जी जी। क्या सर? आपका मिस के साथ एसोसिएशन कैसा रहा? हाउ वुड यू रियली describe your सर experience with this? actually, sir, I started with the Telegram group, sir. I have joined the Miss Telegram group. Then I was doing daily Q banks, and then your message with the audio and sometimes with the video. So ऐसे ऐसे करते करते मेरे को हुआ कि यार ENT करनी है, because there was a name राजीव धवन ENT, and I have heard about that from my seniors. So I was thinking like अभी यार फिर से repeat ENT करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें. Then I took this decision कि यार करते हैं फिर से, कोई नहीं. So I went there and I messaged you and your team that I want ENT app. So I started with that, and I was doing my Q bank from daily, that question from 20 to 50 question from the Telegram groups. So there was some discussion about that. There was some explanation for the questions जहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये आंसर यहाँ पे ये क्यों आया, तो I was just like कि चलो यहाँ पे वीडियोस Yeah, जाके देख लेते हैं यूट्यूब पे. So I was following Mist from the Telegram group and your app, and some of my yeah, friend has took the surgery faculty for your Mist. So इस तरह से very, मिस्ट के साथ हमारा रिलेशन बन गया सर, ये very अच्छा good. है उस हिसाब से। जी सर। Very nice, very nice. So, Miss Telegram group, I would say, has been really very active as far as the या सर। questions are concerned, and a lot of faculties keep putting questions over there so that you are या reminded सर। of those questions again and again, what type of question are coming and how to tackle them also. And thanks for appreciating that. That's a team effort of everyone, and यस सर, एग्जैक्टली। how do you describe that, how the app recorded lectures, like you say surgery and ENT? सो या सर, एक्चुअली सर ENT आई हैव डन इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो हैव डन इट, बट सर्जरी तो उन्होंने किया था सर। बट फॉर ENT आई कैन से दैट कि सर अमेजिंग था वो एक्सपीरियंस सर। आई कैन मैं बता ही नहीं सकता, आई डोंट हैव वर्ड्स इवन के वो कैसा लगा मुझे। मतलब मुझे पहले, मैं कह रहा हूँ सर आपको कि मुझे सब्जेक्ट खत्म करने का जो हल्का सा बुरा लगता है ना, वो मुझे आपके ENT ऐप में लगा सर, यार ये खत्म क्यों हो गया, अभी तो थोड़ा और चलता, कुछ और पढ़ते हैं, मैंने कहा सर से। तो उस टाइप की फील मुझे किसी ऐप में नहीं आई सर। एक्चुअली सबको यही होता है ना कि चलो हाश खत्म हुआ यार, वो नहीं हुआ मुझे। तो रियली नाइस सर, Thank you very रिकॉर्डेड much. क्वालिटी ऑडियो वीडियोस एवरीथिंग इज ओके, एंड सम सर सारे जितनी भी वीडियोस हैं आपकी वो मोस्ट हाई हील्ड पॉइंट्स थे सर, कि ये याद रख लो बस, एंड की पॉइंट्स सर, एंड एवरी क्वेश्चन एवरी केस कि आपको ये पकड़ना है और मार्क कर देना है बस। तो वही चीजें चल रही थी दिमाग में सर। कभी पूरा क्वेश्चन मैंने एग्जाम में भी ऐसा ही किया, आई हैव नॉट रीड फुल क्वेश्चन सर, कि अच्छा ठीक है ऑप्शन ये आए हैं, ठीक है देख लेता हूँ ऊपर कौन सा मैच हो रहा है। सो आई हैव डन इन लाइक दिस, सो टाइम भी बच गया और इजीली क्रैक भी हुए क्वेश्चन। और मैं वहां पे कंफ्यूज भी होने हो रहा था कि यार ये चारों ऑप्शन में से अब कौन सा लगा, बिकॉज मैं उसी तरह से कर रहा था जैसे आपने बताया कि की पॉइंट क्या क्या बोले हैं उन्होंने, जस्ट टुक इट। सो बहुत इजी था मेरे लिए सर, Thank you very much for एंड रियली नाइस your kind words, I एक्सपीरियंस। या must say सर। that. And every faculty member, I would say, every team member, you know, they look forward to this kind of input from student side, that are we on the right path or not? Because at the end of the day, this is material is for the students, and it should add value to their preparation. And MIST has tried to create this application in such a way for all the subjects that the content should be high yield, and it should be conceptual, it should be focusing on the understanding part. And I'm glad या that you're सर। able to appreciate that. And I would take just few minutes more, Arshad. Do you have या any सर। key points to share with your juniors who are preparing for the upcoming examination, that what point they should keep in mind, that this is your message for them? So first of all, I would say that as early as possible you should start it, because at the last you have to do it.
Once you finish your graduation, then you are doing, then that's the calculation which you have to do it, 1 year, 2 year, 3 year, whatever. And then if you start early, then it would be very helpful for you. And second thing, to make a chart for that, I have already made this for myself, that I put all the 19 subjects in that chart, and I was like clicking the ticks on that MCQ, theory, and the images, sir. So it was like a tracking the our progress, sir. और ऐसा होता था, जब भी मैं पढ़ने बैठा था तो पहले मैं उसको देखता था सुबह सुबह, तो पता चलता था, मुझे खुशी भी होती थी और डर भी लगता था कि दिस सब्जेक्ट अपना अभी वीक है और ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो गया, 3 बार इसमें टिक हो चुके हैं. तो दैट फीलिंग यू शुड डू, एंड यू शुड सर मॉनिटर योर प्रोग्रेस, सर. आई थिंक दे शुड डू दैट. एंड माइक्रो एंड द मैक्रो प्लान्स जो हर कोई, सर, हर फैकल्टी बताता है, सीनियर्स भी बताते हैं, तो दैट्स व्हाट रियली वर्क्स फॉर यू. एंड या आई हैव डन दिस ऑल थिंग्स. एंड but sir, keep revising, keep doing MCQs and images, because nowadays we are getting the paper like all mix up images. Sometimes we get more images, sometimes we get more long questions. So we have to make ourselves for every very type of questions, sir. So that's why I have done the mixed type of strategy, sir. Okay. Yes. So were you doing questions regularly? Yeah, sir, daily, sir. I was doing around 100 to 150 questions daily, and in the last 10 days I was more focusing on the grand test and the MCQs more. Then I stopped the theory part. Then I was like, okay, let's do more and more questions. And I had done like this, so actually I was monitoring my questions, and I was seeing that I am doing wrong questions, where I am not remembering my theory. So I was going on that theory again, and where I was thinking like, okay, अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई. फॉर मी दैट वाज लाइक forgetting the theory, not understanding the question language. So if someone is having issue with the understanding the question language, then they have to focus more practice about the questions. And if they are forgetting like me the theory, then they have to revise more and more for the theories. So so guys, people preparing for the June exam of 2022, you have a very clear message that do questions every day. Yeah, sir. I know it's tough, but in these 4.5 months or 5 months, you have to stretch yourself, accommodate the questions within the time schedule of notes also, number one. Number two, Yes, Arshad is saying that, take an early start. Guys, it's January. Please start studying from now so that you get ample time for revision later on. Because if you get serious about the exam in the month of March, we are left with very less time actually. So let us take an early start. Let us learn from Arshad 2 things. Take an early start. Let us start preparing from now. January, we are sitting in the first part of January. Let us start from now. Get serious about studies. Do questions every day. And lastly, Arshad, I hope you'd agree with me. Every subject needs 3 revisions. 3 revisions. That is the game changer. Exactly. And I can absolutely relate to when students say, सर सब भूल गया सर, सेकंड रिवीजन के बाद जो कुछ भी याद नहीं आ रहा, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर ही नहीं याद आ रहा. लेकिन धीरे धीरे करते करते जब आप किसी सब्जेक्ट को 3 बार रिवाइज कर लेते हो, उसके क्वेश्चंस कर लेते हो, फिर रेट्रोस्पेक्टिव नोट्स देख लेते हो, तो करते करते कुछ चीजें दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती हैं और वो एग्जाम में आप बहुत श्योरली आंसर कर पाते हो. तो जो भी स्टूडेंट इस समय सुन रहा है, मैं अर्शद के थ्रू मैसेज देना चाहता हूं कि रिविजन्स आर द की टू सक्सेस. एक बार पढ़ के समझ लेना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो हर जगह बच्चे, हर फैकल्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि आपको कंटेंट को प्रॉपरली दिया जाए. किसी भी, चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर है या ऑनलाइन लाइव है या फेस टू फेस क्लास है, वो तो समझ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है. मैं ये नहीं कहता कि बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है. फोकस तो क्लास में समझ लोगे, लेकिन वो तो आपका और फैकल्टी का एक टाइम कनेक्शन हो गया. उसके बाद जो मेन स्टोरी है वो आपका अपना हार्ड वर्क है, आपकी डेडिकेशन है, आपकी कंसिस्टेंसी है, और उससे 3 रिवीजन का स्कोप निकल आता है. और वहां से कुदरत चाहे हमें ब्लेस करे तो हम आज जहां अर्शद बैठा हुआ है, कल आप बैठे हो. इज दैट नॉट क्लियर? आई वाज लाइक सेम. यस सर. व्हेन जब आपके इंटरव्यूज सम सीनियर्स के साथ चल रहे थे, तो मुझे भी यही फील आ रहा था कि हो सकता है कभी मैं भी ऐसे बैठूंगा. So उससे और मोटिवेशन मिलती है कि यार और पढ़ते हैं अभी. एंड द मोटिवेशन इज कम्स फ्रॉम आवरसेल्फ. कोई मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक हम खुद नहीं पढ़ते हैं, और जब तक वही चीज हमको मोटिवेट करते हैं, यार एक चैप्टर हो गया तो दूसरा भी कर लेंगे. सो दिस इज छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा मैटर कर जाती है सर लाइफ में. सर ये आपने बहुत अच्छी बात की. मैं इसमें बहुत बड़ा मैं बिलीवर हूँ इस चीज का कि हमें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता.
हम ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं। और बिल्कुल सही बोला। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जो भी मतलब स्टूडेंट मेरे कनेक्शन में आते हैं कि किसी पे डिपेंडेंट मत हो बच्चे। आप इतने एफएमजीज इतने ज्यादा इंटरनली स्ट्रांग लोग होते हैं क्योंकि दुनिया देख रखी होती है, एक फॉरेन कंट्री में रह चुके हैं, फॉरेन लैंड में अपने आप को सरवाइव करने की कला जानते हैं। तो बल्कि हमें आपसे सीखना चाहिए। आपको तो मतलब we need not really FMGs are very strong people. I believe in that and I respect them for that. And only thing is that sometimes टाइम की शॉर्टेज की वजह से और थोड़ा सा लेट स्टार्ट वजह से हमारे पास ये इशू आ जाता है कि हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं 2-3 बार, तो हमें लगता है पेपर बहुत टफ है। लेकिन आज अरशद भी यही चीज कह रहा है कि अर्ली स्टार्ट लिया, रिवीजन करी, कंसिस्टेंट रहे तो पास हो गए बच्चे। ये रेसिपी ऑफ सक्सेस है। डरना डराना नहीं है। कोई भी सीनियर कुछ भी बोले, अपनी लय में चलते रहना है, पढ़ते रहना है। और आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि मे गॉड ब्लेस अस ऑल, मे एवरीवन पास। आमीन। एग्जैक्टली सर। और सर ऐसा भी नहीं होता लाइफ में सर, सब अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं सर। फ्रॉम लोगों की ये कंसर्न बहुत होती है कि लोग क्या कहेंगे। और इस लाइन को मैंने बहुत सही से लिया है। मैंने कभी किसी को नेगेटिवली नहीं लिया सर, नेवर सर। मुझे जो भी चीज आई वो पॉजिटिव ही आई सर। और किसी ने अगर नेगेटिव चीज बोली तो आई स्टॉप एंड आई सेड माई सेल्फ के कोई नहीं भाई, बोल के क्या जवाब देगा, तू कुछ कर फिर जवाब दे देगा अपने आप। तो रिजल्ट सर अपने आप बोलता है सर। तो इसलिए उस टाइम थोड़ा लेना चाहिए पॉजिटिवली। कुछ सीनियर्स अच्छे भी होते हैं सर, कुछ बेचारे उनके साथ बैड एक्सपीरियंस होता है तो वो उसी चीज को बताएंगे, उनकी उसमें कोई गलती भी नहीं है। सो दैट इज व्हाट मेरे साथ सीनियर्स भी, मेरे जूनियर्स भी, और जो मेरे खुद के ईयर मेट थे सर, फैमिली ऑल, इट्स वाज लाइक के हर कोई सपोर्ट कर रहा है। एंड आई वाज मोर लाइक के यार इनके भरोसे पे खड़ा उतरना है, इंस्टेड ऑफ दैट के यार इनको दिखाना है। मेरे को ये नहीं था कि जो मेरे अगेंस्ट है उसको करके दिखाना। मैं ये था कि जो मेरे साथ है उसके भरोसे को कायम रखना है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता था इस तरह से और आगे बढ़ने में। रियली that's very good positive attitude. We should really sort of look towards people who are supporting us, who are encouraging us. There are always people, but we are also everybody within you. Look within. You are also positive and you are also negative. Certain things are good about you, certain things are not bad good about you. But everyone is a combination of positive and negative. And similarly, we have got around us. Certain people are negative with you, certain people are positive with you. That doesn't matter. That doesn't mean that that negative person is a bad person. But let us really, keep focused on our own work, keep doing our work, and may God bless our hard work. That's the way I think we should live our life. So Arshad, once again, best wishes from our side. Whole Miss family, whole Miss team, congratulate you on your success, and we are very happy that we could become part of your journey in some way, in the form of Telegram channel, in the form of application which Mist has developed. And we are very, very, I would say proud of that we could contribute something to your journey towards clearing the FMG examination. And our heartfelt best wishes that may you become a wonderful doctor of your area. You belong to Rajasthan, and Rajasthan definitely needs a lot of doctors, you know it. And may you reach heights over there. And once again, I congratulate you and thank you very much, Arshad. Thank you so much. Thank you very much.